दाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांति नामिने नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 2 times, you please tell loudly. हरे कृष्णा लाउड जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज टेल लाउडली प्लीज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I pay my obeisances unto the lotus feet of Srila Prabhupada. I express all gratitude and make many prayers to Srila Prabhupada, having given all of us a good opportunity to go back to Godhead. All go to Srila Prabhupada for his wonderful devoted services to Srimati Radha and Lord Gopinath. जोर से बोलिए सभी लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, we are doing Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Verse 30. हमें भागवत कथा में पहले स्कंद में 8वां अध्याय है और ये 3री श्लोक से आरंभ करते हैं। और मैं पहले ये श्लोक को धीमा स्लोली, I'll go very slowly 3 times, please repeat along with me. Thereafter I shall do the narration. उसके ऊपर मैं विवरण करूँगा। जन्म कर्म चा विश्वात्मनम् अद्यस्य कर्तुः आत्मनः तिर्यान् ऋषिषु यादसु तद् अद्यन्त विदम्बनं जन्म कर्म च विश्वात्मन् अद्यस्य कर्तुः आत्मनः तिर्यन् ऋषिषु यादसु तत् अत्यंत विदम्बनं जन्म कर्म च विश्वात्मन् अद्यस्य कर्तुः आत्मनः तिर्यन् ऋषिषु यादसु तत् अत्यंत विदम्बनं जन्म कर्म च विश्वात्मन् अद्यस्य कर्तुः आत्मनः तिर्यन् ऋषिषु यादसु तद अत्यंत विदम्बनम। The word to word meaning of this verse, जन्मा मीन्स बर्थ। सभी लोग समझते हैं जन्मा बोल तो आप जन्म लेते हैं, वही एक्टिविटी कर्मा एक्टिविटी जो भी हम नित्यकृत कर्म करते हैं, दैट इज कर्मा एक्टिविटी। छ एंड विश्वात्मन, वो सोल ऑफ द यूनिवर्स, सभी इस विश्व के लिए आत्मा है, वही परमात्मा है। और अजस्या ऑफ द अनबॉर्न, ही इज अनबॉर्न। हम सभी लोग जन्म लेते हैं, मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, किंतु भगवान के लिए कोई जन्म नहीं। और अकर्तुः ऑफ द इनएक्टिविटी, अभी हम लोग सब चेतन हैं, एक्टिव, वी आर ऑल एक्टिव, वी आर, दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग अ फूड, वेयरिंग क्लोथ्स, डूइंग एवरीथिंग। ये चेत इनएक्टिव, ये तो एक ही जगह रहते, जिस जगह है उसी तरह है। और आत्मनः ऑफ द वाइटल एनर्जी, तिर्यक एनिमल, पशु पक्षी को तिर्यक कहते हैं। नृह ह्यूमन बींग, नर बोल तो हम मानव लोग। ऋषिषु इन द सेजेस, ऋषि लोग। और यादसुहु इन वाटर, पानी में। तत् दैट, अत्यंत वेरिटेबल, विदम्बनम बिविल्डरिंग, ऑफ कोर्स इट इज बिविल्डरिंग ऑफ सोल ऑफ द यूनिवर्स दैट यू वर्क। एक कुंती ने कह रहे हैं इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत, जैसे कृष्ण भगवान ఇక్కడ అందరికి హిందీ తెలుగు వస్తుందా?
తెలుగు వస్తుందా హిందీయా? తెలుగు, ఇంగ్లీష్ को ओके, आई टेल इन ऑल द 3 लैंग्वेज, डोंट वरी, बिकॉज एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड. सभी लोग समझना है, అందరికీ అర్థం కావాలి, ఏదో నేను చెప్పి వెళ్ళటం కాదు, అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. నేను 3 భాషల్లో కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇది కురుక్షేత్ర యుద్ధం అనంతరము ధర్మరాజు మళ్ళీ 3 अश्वमेध अनुष्ठिస్తాడు. उन्होंने अनुसंधान करते हैं 3 अश्वमेध. उसके उपरांत में భగవాన్ ద్వారకకు చలే అయితే ఉపస్థానం అవుతాయి, తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు. అటువంటి సమయంలో కుంతి పరిగెత్తుకుని వస్తుంది, పరిగెత్తుకు వచ్చి ఆయనతో విలపిస్తూ చెప్తుంది, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో కష్టాలు, బాల్యాवस्था నుంచి, बाल्यावस्था से बहुत कष्ट भोगा हूँ, मुझे आप कष्ट ये करने के लिए नहीं बोलते, मुझे और भी कष्ट देना, इनका कष्ट इव्वाल नाकु ఎందుకు, क्यों बोलते हम जिस समय कष्ट रहते उसी समय हम मंदिर में आते, इस मंदिर में या किसी देवता के मंदिर में जाते, हम उनका पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं. तो कुत्ती ने बोलते हैं मुझे कष्ट ही भोगना है, क्योंकि मैं तुम्हें भगवान बोल के जानता हूँ, तुम्हारा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अंत में मुझे लाभ होता है, ना मुक्ति అనేది లభిస్తుంది, मोक्ष అనేది లభిస్తుంది, उसके लिए मुझे कष्ट ही देना बोल के बोलती. और उस समय में ये सभी विवरण करते रहते. Of course it is bewildering, O soul of the universe, that you work through, you are though you are inactive and that you take birth, you are the vital force of the unborn and unborn. You are yourself descend amongst the animals, men, sages and aquatics. Verify this is bewildering. ये तो आश्चर्य की बात है. भगवान सब पूरे एक ये इस जगत के लिए नहीं, ये जगत में बहुत से ब्रह्मांड है, बहुत से ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में एक कैलासमु, ब्रह्मलोकमु, वैकुंठमु ఉంటుంది. सभी बहुत, और उसके अलावा बहुत से भिन्न ग्रह रहते हैं. अपना ये जो पृथ्वी लोक है, ये भूमि जो का जस्ट इट्स अ फ्रैक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ इट. एंड हम जीव लोग ऐसे पृथ्वी दूसरे ब्रह्मांड में भी हो सकता है, दूसरे ब्रह्मांड में हो सकता है पृथ्वी, और वहाँ इसी तरह मानव लोग भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं देख सकते, వాళ్ళని చూడలేం మనం. అటువంటిది కుంతి చెప్తోంది, ఓ పరమాత్ముడ కృష్ణ, నువ్వు అందరికంటే ముందు నువ్వు, నీకు జన్మ అనేది లేదు, నువ్వు तुम्हारा जो भी अब द्वापर में उन्होंने देवकी माता के घर में जन्म लिए, लेकिन वो जन्म नहीं होता, उन्होंने तो प्रत्यक्ष हुआ, प्रकट हुआ. जैसे हम माता का गर्भ से जन्म लेते उस तरह नहीं होता. తల్లి గర్భంలో జన్మిస్తే ఆ విధంగా జన్మించలేదు, తను అక్కడ ప్రకటించాడు. ఆ కారాగారంలో దేవకి మాత ఉన్నప్పుడు ఆ కంసుడు చూడడానికి ఆమె గర్భవతిగా ఉంది, కానీ డెలివరీ టైంలో మటుకు ఆయన అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు, प्रकट हो गया, अवतार हो गया. वो जन्म नहीं होता. और अपने हम सभी लोग हम ही नहीं, चिमटे से ब्रह्मा तक सभी लोग माता के गर्भ से उत्पन्न होते. ब्रह्मा को सृष्टि करते, वो उन भगवान की नाभि से ही प्रकट हो जाते, कमल के पुष्प पे, और बाकी पूरे गर्भ से जन्म लेते हैं. और हम अपने माता पिता को चुन नहीं सकते, लेकिन भगवान का उस तरह नहीं. भगवान का अवतार जिस जगह चाहिए वहाँ उन्होंने प्रकट हो सकता, अवतार कर ले सकते. उन्होंने तो एक मछली के रूप में मत्स्य अवताరంగా తీసుకున్నాడు, और एक कूर्मा अवतार, कूर्म के अवतार ले लिए रूप. फिर वराह రూపంలో ఈ విధంగా నరసింహతో విచిత్రమైన అవతారం, అటువంటిది ఎక్కడా లేదు. उनका मुँह सिंह के ले रहे थे, बाकी देवपुरा अपने जैसे रहते, वो तो स्पेशल रूप है. इस तरह वो भी उनका गर्भ को होता, एक दीवार को खंबे को माता बनाने के तोड़ के बाहर आ गए. उस तरह भगवान के लिए कोई नो किसी घर में ही जन्म लेना और वो भी माता पिता के कारण होना, वैसा कुछ भी नहीं. इनका संकल्प होने से उन्होंने अवतार लेते हैं, और उसी को हम जन्म बोल के बोलते, लेकिन इट्स एक्चुअली अवतार है. और ऋषियों के जैसे भी जन्म लिए, नारद महर्षि भी कृष्ण भगवान ही हैं, वेदव्यास भगवान भी भगवान ही है, भगवान के अवतार ही है. ऐसे बहुत से ऋषियों में भी उन्होंने ही है.
the transcendental pastimes of Lord are not only bewildering but also apparently contradictory. अभी द्वापर युग में जिस समय ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఆయన ప్రత్యక్ష అవతరించాడో ఆయన అందరి మాదిరిగానే सबके साधन मध्य लोगों के जैसे व्यक्ति के जैसे बाली चेष्टा ओ भिन्न दंगल चढ़मू दही चोरी करना दूध चोरी करना ये सभी जैसे हम लोग करते थे। हम लोग आजकल तो हम वो सब नहीं चाहिए, हम लोग को बाल्या सब क्या चाहिए, बिस्किट चॉकलेट आइसक्रीम वो सब रहे तो किले के खा लेते। उस तरह उस समय में कृष्ण भी उस तरह बाल्य चेष्टा सभी के सभी देखते कि वो, लेकिन उसी समय वही 5 वर्ष से 10 वर्ष समय उन्हें बहुत से రాక్షసోం को वध किया। ఎంతో మంది పెద్ద పెద్ద రాక్షసులను చంపేశాడు పూతన। అప్పుడు పూతన చంపినప్పుడు అతను 3 నెలల పాప 3 महीने का शिशु है। उस समय में उन्होंने पूतना राक्षस को वध कर दिया और वैसे बहुत से राक्षसों को वध किया। वो 10 वर्ष समय और गोपियों के साथ भी रासलीला किए। रासलीला तो सभी लोग को संशय होता, अरे ये क्या इतने सहस्रों में ఎన్నో వేల గోపికా స్త్రీలు అందరితో కూడా నృత్యం చేశాడు, సంగీతం చేశాడు। దాన్ని గలత్ సమझते, क्या समझते, एक स्त्री लंपट है, बोलते, लेकिन वो स्त्री लंपट 5 वर्ष और 10 वर्ष के समय क्या कर सकते, एक स्त्री के साथ कुछ नहीं रहते। वो जो गोपिका स्त्री थे वो लोग सभी लोग 25, 30, 40 वर्ष के थे। वो लोग अपने पतियों को छोड़ के कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए, संगीत गाना गाने के लिए आए, गीत गाने के लिए आए, क्योंकि उनको बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे। उस तरह था। और ये सभी चेष्टा देख के लोग में बहुत से संशय हो गए, उन्होंने स्त्री लंपट है वो करके उन्होंने भगवान ने 16,108 स्त्रियों को विवाह कर लिया, लेकिन ये एक भी उनका डिजायर से कामना से नहीं किया। ఒక్క స్త్రీని కూడా తన ఇష్టంతో మోహించి పెళ్లి చేసుకోలేదు। रुक्मिणी देखिए, रुक्मिणी अम्मा, रुक्मिणी और लक्ष्मी अम्मारे, लक्ष्मी माता ही रुक्मिणी के जैसा अवतार लिए। और उन्होंने भी संदेश भेज तो जाके लेके आके उनको विवाह कर लिए। सत्यभामा को तो उन्होंने बहुत मिल गया, सत्याजित ने बहुमत के जैसे दे दिए। जाम्बवत भी उसी तरह जाम्बवत ने दे दिए। सभी 8 रानियाँ वैसी। और 16,100 दूसरे पत्नी जिस समय नरकासुर का वध हुआ वहाँ उनके कारागार में बंदी थे, वो सभी लोगों को छोड़ देते, छोड़ के उनको बोलते, कृष्ण भगवान बोलते, आप अभी यू आर फ्री, स्वतंत्र है, आप अपने अपनी जगह को जिस जगह चाहिए वहाँ जा सकते। लेकिन वो सभी स्त्री क्या बोलते, वो कृष्णा हमें कोई नहीं है, अब तो बहुत समय बीत गए, हम यदि हमारे पिताजी के पास या हमारे पति का तो वो लोग हमारे को स्वीकार नहीं करेंगे, మనం స్వీకరించారు వాళ్ళందరూ కూడా। అందుకోసం हमारे को निंदित दोषित करते, क्योंकि हम नरकासुर के कैद में रहते, तो इसीलिए हमारे को आप ही रक्षक है, आप ही स्वीकार करना वो बोलते। उस तरह वो लोग प्रार्थना करने से भगवान और सभी लोगों को स्वीकार कर लेके सभी लोगों का विवाह कर दी। वो भी पहले उनके दूसरे 8 पत्नियों का आज्ञा लेकर वो लोगों को विवाह कर लेते। विवाह कर लेके सभी के साथ उन्होंने रहते, किसी एक के साथ नहीं। 16,108 के पास ये भी उन्होंने, नारद महर्षि ने एक समय वहाँ द्वारका में गए थे। नारद महर्षि को जानता है कृष्ण को नहीं किस तरह रह सकते, क्योंकि स्वयं उन्होंने कृष्ण भगवान का अंश है। तो कृष्ण भगवान से प्रश्न करते, ओ कृष्ण నీకు 16,000 మంది 16,108 పత్ని భార్యలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరితో నువ్వు ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు? నేను ఆజన్మ బ్రహ్మచారి, मुझे तो कोई पत्नी नहीं, कोई स्त्री को मैं विवाह ही नहीं किया, मैं तो ब्रह्मचारी, तो आप कैसा संभाल रहे इतने लोगों को? तो भगवान ने कहते, नारद महर्षि आप स्वयं जाके देख लेना सभी के अंतःपुर में। तो वहाँ तो रुक्मिणी जी ऑलरेडी है, अगर रुक्मिणी होंगी, फिर उन्होंने वहाँ से सत्यभामा के भवन पे जाते, वहाँ उन्होंने कृष्ण भगवान रहते, फिर जाम्बवती, ऐसा उन्होंने एक एक करके पूरा 16,100 भवनों में जाते, सभी जगह कृष्ण भगवान रहते। उस तरह उनका एक द्वापर युग में भगवान ने 10 बार विश्वरूप बताए थे, ये एक तरह विश्वरूप है। और जिस सहस्रों गोपियों से नृत्य और नाच करे वो भी एक तरह विश्वरूप है। जिस समय में यशोदा माता उनको
तुम मट्टी कायो నువ్వు మన్ను తిన్నావు నీ నోరు తెచ్చి చూపెట్టమంటుంది आप मुंह खोल के देखा तो उस समय जीभ खोल के बताते कि वहाँ सभी पूरा जगत पूरा उनके इस मुंह में मुंह के अंदर है तो आ విధంగా అతను విశ్వరూపాన్ని ఆ విధంగా కూడా ఉంచాడు గోదాగిరి లేపినప్పుడు పర్వతం చుట్టూ కృష్ణుడు ఉన్నాడు అందరూ నైవేద్యం सभी लोग भोग दे रहे सभी लोगों का भोग स्वीकार कर रहे वो गोवर्धन के गिरी के आसपास पूरा भगवान का रूप ही है ऐसा है तो उन्होंने जो चाहिए वो रूप धारण करने का शक्ति है और सभी लोग उस समय में क्या हम आज क्योंकि ये सब अपने पास अभी महाभारत रामायण भागवत दूसरे बहुत से पुराण हैं उपपुराण हैं वो सभी जानकर ऐसे सत्संग में भाग लेकर हम सभी जानते हैं कि भगवान है वो भगवान है लेकिन उस समय में उसको कोई थोड़े से लोग जैसे भीष्म द्रोण यशोदा माता देवी की माता यही लोगों को जानता है कि वो अक्रूर विदुर उद्धव यही लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और कोई नहीं जानते थे कोई समझते थे कि वो एक शिशु के रूप में ही उनको दैव शक्ति आ गई देवता का शक्ति था उसीलिए उन्हें बड़े होने का भी सभी कर रहे हैं उनका देवता का शक्ति समझते लेकिन भगवान कोई न जानते थे हम लोग के लिए कृष्ण भगवान ने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को बताया था गीता बोधन में किए कि मैं ही भगवान हूँ यदि कोई व्यक्ति सभी लोग उनको पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए उनको शरणागति करने से हमारा रक्षा करेंगे और संपूर्ण विश्वास शरणागति से ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस हरे कृष्णा अभी कर्टन्स खोलेंगे दर्शन कर सकते बैठ के कथा में आगे बैठ के दर्शन कर लीजिए दे आर ऑल इनकंसेबल टू द लिमिटेड थिंकिंग पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग क्योंकि अपना जो भी ज्ञान बुद्धि ఏదైతే ఉందో చాలా తక్కువ ఇది ఉంది మనకు జ్ఞానం అజ్ఞానం వల్ల మనము భగవంతుని గుర్తించలేం ఈ కాంట్ ఐడెంటిఫై హిమ్ యాస్ ది సుప్రీం గాడ్ and we all think that he is only in the form of some stone or metal deity something like that but it's not like that even in spite of अच्छा रूप में रहते भी क्योंकि वहाँ प्रतिष्ठा करते समय बहुत से दिव्य मंत्र करते हुए chanting lot of mantras we have installed there so भगवान को सुन सकते देख सकते सभी होता लेकिन अपने से इस समय ये कलयुग समय में उन्होंने किसी से भी बात नहीं करेंगे जैसे अपना इच्छा रहती उसको पूरा करते हैं वो समय पर जैसा अपने को चाहिए उस समय करेंगे and he appears in the form of a boar amongst the animals వరాహ రూపం ధరించాడు అదేవిధంగా in the form of a human being as Rama Krishna etc that means whatever Krishna I am telling here is about the Goloka Vrindavan Krishna that Goloka Vrindavan this entire earth entire universe whatever you see all the universe are crores of universes is in 25% space balance 75% 75% ఆకాశం ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదంతా కూడా గోలోక వృందావన్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ గోలోక వృందావన సో దేర్ ఓన్లీ యూ కెన్ దేర్ ది ఒరిజినల్ కృష్ణ విత్ రాధారాణి ఇస్ దేర్ హియర్ ఇన్ ద్వాపర యుగ ఓన్లీ కృష్ణ ఇస్ ఇన్కార్నేటెడ్ nowhere it is in Bhagavatam or Mahabharata or anywhere it is mentioned about Radharani. Radharani is not incarnated. She has incarnated as Lakshmi in other Vaikunthas and Lakshmi has incarnated as Rukmini Devi during Dwapara Yuga. So whatever Radharani we are worshipping, it is a form which is in the Goloka Vrindavana. But she is there. She is the form of Lakshmi in all Vaikunthas. He appears in the form of boar against the animals, in the form of human being as Rama, Krishna, etc., in the form of Rishi like Narayana Rishi and Narada Maharishi, Vedas Bhagwan, and in the form of aquatic like fish. Fish also was there, yet he is unborn. He has taken many incarnations. This moksha, salvation or liberation is only meant for the living beings. Otherwise, what happens is life after life will be taking many births. Earlier we had some lakhs of, not 1 or 2 lakhs, many lakhs of lives, like insects, animals, birds, trees, everything. Because we have, now
Presently, God has given us luckily a human body with intelligence. Having intelligence, we should use it in a proper way, in a dharma, so that we get moksha. What is moksha means will not take again any birth. Otherwise, if you do only sins, पापालु पुण्याले जैसे यदि आप पाप और पुण्य करते रहेंगे तो क्या होते, वो पाप करने से फिर पुनः पशु पक्षी की योनि में जन्म लेते, पशु पक्षी का जन्म। यदि पुण्य करे है, पुण्य करने से हमें उत्तम लोग को जाते, हो सकता संधान को जा सकते, या देवलोक, देवेंद्र लोग, ब्रह्मलोक, किसी भी जगह जा सकते, डिपेंडिंग अपॉन द पुण्य व्हाट यू हैव डन। अदरवाइज ये पूरा पृथ्वी पूरा एक कारागर के जैसे है। कारागर में जो भी दोषी है, दोषित लोगों को शिक्षा दंडन भी देते हैं, शिक्षण भी देते हैं। शिक्षण क्या, व्हाट इज शिक्षण? शिक्षण इज नॉट पनिशमेंट, शिक्षण इज ट्रेनिंग, दंडन इज पनिशमेंट। So like that they will be made into a proper living being, and when they come out of the jail, they will follow right path to live. Here in this world, right to path live means being honesty, being kind to everybody, helping others, like that one. But for us, right path is the entire universe itself is a prison. We are all criminals because we are earlier committed. इदंता कारागार में, जगत पूरा कारागार है। ये कारागार में हम पूर्व में बहुत से पाप किए हैं, उसके अनुभव करते हुए यहाँ बहुत से जन्म ले लिए। अभी मनुष्य के रूप में भी हम कुछ पाप, बहुत से पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। ये कारागार के जैसे हम बंधन में हैं, राजसिक और तामसिक गुण में बंधन है। नेचर हैज हैविंग 3 कैरेक्टर्स, इंटेलिजेंस क्वालिटी, passion quality, and laziness. These things, ignorance. That means whoever is having satvika, because you are having some part of satvika, I don't say 100% satvika, you are part of satvika, you have come into the temple. अब मंदिर के अंदर आपके इसमें सत्व गुण भी है, उसके कारण आप यहाँ मंदिर में आके पूजा करने के लिए देव भगवान को प्रार्थना करने के आए हैं। यदि सत्वगुण नहीं रहा तो आप नहीं आते थे। राजस गुण रहे तो क्या होते, आप सूर्योदय से सूर्यास्त और भी ज़्यादा समय कष्ट करते हैं। आपको जो भी इच्छा है वो उसके लिए यू विल डू लॉट ऑफ हार्डशिप। कुछ धन अर्जन करने के लिए, कुछ वाहन खरीदने के लिए, टू बाय ए गुड कार, और कुछ आभरण खरीदने के लिए, स्वर्ण आभरण करने के लिए, कुछ एक अच्छा घर बनाने के लिए, ये सब के लिए आप बहुत श्रम करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज पैशन, राजस गुणम, राजस गुण कहते हैं। और तीसरा गुण है इग्नोरेंस, दैट इज तामस गुण, तामसिक गुणम अनमट। इन द तामसिक गुण यू विल बी लेजीनेस, आप कुछ काम नहीं करना चाहते, अरे ये क्यों करना, नहीं करते, काम नहीं करेंगे। बट आपको दूसरे के पास जो भी धन है उसको लूटना, और दूसरे के पास जो भी धन है उसको लूटना, उसको वध करना, संहार करना, जो भी करना है, लेकिन उनके पास जो भी धन है वो आपको चाहिए। जैसा दुर्योधन था, और नहीं तो स्त्री कामना से किसी दूसरे स्त्री को अपहरण करना, जैसे रावण ने सीता माता को लेके आ गए। नरकासुर भी 16,000 लोग थे उनके पास स्त्रियाँ, और इनके पास भी सहस्रों में थे। रावण के पास सीता माता को तो कैद करके ला लिए, अशोकवन में छोड़ दिए, बलात्कार नहीं कर सकते क्योंकि रावण को श्राप था, यदि किसी स्त्री को बलात्कार करेंगे उन्हें मृत्यु हो जाएगा। तो उस कारण वो सीता को उठा के लेकर गए, लेकिन उसको बलात्कार नहीं किया। लेकिन उनके पास बहुत से सहसों से स्वीकार कर लिए। यदि कोई स्त्री उनको स्वीकार करे तो उनसे काम भोग कर सकते, उस तरह रहता। तो इसीलिए ये सभी तामसिक गुण में आता है। तामसिक गुण रहने से विल बी इन बॉन्डेज। तामसिक गुण, राजस गुण, वॉट एवर इट इज, when you are having lot of desires, also you will be attached to the materialistic things. ये सब ये प्राकृतिक विषय, ये प्राकृतिक विषय भोगने में हम अपना जीवन पूरा उसमें बीत जाता। तो इसीलिए हमें शुद्ध सात्विक रहना, we have to be pure सात्विका, we have to be lot of efforts for being intelligence and use that in the form of devotion to Krishna. Again, devotion to Krishna, I don't say that we need to do, but come into temple, do the archana and everything like this. That is different.
बट while doing your कर्मा, आपका कर्म जो भी है करते वो करते हुए कर्म ఏదో అది చేస్తూ నువ్వు భగవంతుని भगवान मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ दिस इज एज ए सर्विस. भगवान ने पूरा सृष्टि कर दिए. इन दिस सृष्टि हम फॉर अस टू एडवांस. पूर्व काल में भी विमान था, नहीं था बोल के नहीं. पुष्पक विमान तो रावण के पास ही था. एंड यू नो द कैपेसिटी ऑफ दैट पुष्पक विमान, इट इज अनलिमिटेड. यदि उसमें all the monkey army which went to fight with Ravana, they became alive. At the time of battle मृत्यु हो गई, युद्ध के समय मृत्यु हो गई, लेकिन युद्ध के उपरांत में वो सभी लोगों को जीवित कर दिए. ब्रह्मा ने जीवित कर दिए सभी लोगों को. वो सभी लोगों को रावण के पट्टाभिषेक फॉर फ्री क्रॉनिंग ऑफ रामा सभी लोग आते. किस तरह आते? पुष्पक विमान में आते. उसमें पर आपको उदाहरण के लिए यदि 1 लाख बैठ गए और एक जीव के लिए जगह रहता. लाइक दैट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग अनलिमिटेड कैपेसिटी इन दैट वन. एंड नॉट लाइक टुडे, इट वाज नॉट रिमोट्स वर रिक्वायर्ड. जस्ट मंत्र बोलने से वो चले जाता था, उड़ जाता था. बट नाउ इन दिस कलियुग वी डोंट वी हैव दैट पावर. मंत्र का शक्ति नहीं है. उसीलिए अपना साइंटिस्ट, विज्ञान शास्त्र लोग सभी విజ్ఞాన శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని దే హ్యావ్ మేడ్ ది రీసెర్చ్. దే హ్యావ్ నాట్ ఇన్వెంటెడ్ ఎ న్యూ థింగ్. వాట్ ఎవర్ వాస్ దేర్ ఇన్ ది అర్లియర్ టైమ్. విత్ ప్రెజెంట్ ఇఫ్ యూ somebody goes to the Indonesia, Bali, you can see Virochana's temple over there. You can see the his aeroplane over there. Aeroplane still that Virochana means it is Satyayuga, some 40 lakhs years before. That time temple is there, that time aeroplane is there. It is as in the form of a archaeology, this thing, it is there. Nobody has disturbed it. So, उस तरह whatever scientists have done, they have researched. They have not made the real search. They have made the research, and they have made all these things for our advancement in this Kali Yuga. In the Shruti Mantra, it is said that the Supreme Brahman is nothing to do. ये जो भी सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण है, ये काली हम लोगों के लिए, फिर पशु पक्षियों के लिए भी नहीं होता, क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं है. ज्ञान ही नहीं, केवल उनको इतना ज्ञान है कि वो आहार है खाना, बस उतने ही, और सो जाना. और जैसे अपने पति पत्नी रहते, उसका भी पति पत्नी रहते, उसका भी स्त्री रहते, उनके साथ विहार कर लेना, उनका ही उतना ही ज्ञान रहता. उससे ज़्यादा कर्म उनका ज्ञान नहीं रहता. ये पूरा ज्ञान पूरा अपने के लिए, ये सात्विक गुण, राजसिक गुण, ताम, एवरीथिंग इज ओनली फॉर मेंट फॉर दिस वन. बिकॉज वी हैव बुद्धि, इंटेलिजेंस, हमें समझ सकते. मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, समझ सकते. लेकिन पशु पक्षी को ज़बरदस्ती आप बिठा लेकर के बिठाए तो नहीं सुनते, वो समझते ही नहीं. तो ये पूरा अपने लिए है. तो ओनली वी कैन गेट आउट ऑफ द बॉन्डेज. हम ही इस बंधन से मुक्त हो सकते. पशु पक्षी बंधन से मुक्त नहीं होती. पशु पक्षी तो फिर ऐसे ही उनका कर्म करते करते उन्होंने भी एक समय मनुष्य का रूप धारण करके फिर ऐसा अपने जैसे प्रयास करना पड़ेगा. ప్రయత్నం చేస్తేనే వాళ్ళు ముక్తి అనేది వస్తుంది. అలాగే మనకు కూడా. సో వీ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ and to achieve salvation we need to remember Krishna in any of his form. मैं ये नहीं बोलता कि इसी रूप को आप स्मरण करना बोल के. भगवान का किसी रूप को भी, नरसिंह स्वामी हो सकता, राम भगवान का हो सकता, वराह का हो सकता, तिरुपति बालाजी, किसी को भी आप स्मरण करने से आप मुक्ति पाएंगे. मुक्ति पाने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स. और अभी जो भी कर्म कर रहे हैं, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल, वॉट एवर योर ओन बिजनेस और इंडस्ट्री, वो सभी करते समय भी आपको क्या करना चाहिए? जस्ट रिमेंबर, ओ गॉड, आई एम डूइंग कर्मा एज ए सर्विस अनटू यू, अट योर लोटस फीट. करिए एंड यू कैन हैव डिजायर्स बट डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट्स. यू हैव टू रेनंशिएट द रिजल्ट्स, नॉट योर प्रेजेंट क्लोथ्स एंड टेक saffron clothes. Saffron clothes लेने से कुछ भी नहीं होता. There are many people having saffron clothes, they have a lot of desire. They do a lot of wrong things also. So we have to be careful about it also. So what we have to renunciate is only your desires, results of the desire. You can have anything, and all those desires when you come here, you need not express. He knows. हम सभी लोग ने भगवान के ही संतान हैं, भगवान के संतान हैं, और हमें उनसे
We have 9 types of relations. 9 तरह भिन्न भिन्न संबंध है भगवान के साथ, वो सभी हमने भूल गए. ఆ 9 రకాల సంబంధం అన్నీ కూడా మనం మర్చిపోయాం. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అన్నీ గుర్తుంటుంది మనకు, మనకు పూర్వ జన్మలో జన్మలన్నీ కూడా తెలుసుంటుంది. కానీ ఈ तल्ली गर्भवती को चिन तरवाता जैसे जन्म लेते हैं गर्भ से, उस समय हम ये आकर्षित हो जाते, इस जगत से आकर्षित होकर के गुणों से हम सभी को भूल जाते, भगवान को भी भूल जाते. उनके साथ 9 तरह का संबंध है. अपने बॉस, आप किसी जगह आप काम कर रहे होंगे, you are working somewhere, somebody is your boss, only in this material world, but he is not an actual boss, he is only a temporary boss. He might be transferred, shifted, anything can happen. If he is a teacher, only for 1 year he is teacher in that class, दूसरे क्लास में दूसरे टीचर आ जाएंगे. And if it is you are working as a principal, some students might be there, but they will go and some other will come, and you might go into some other thing. Not only I am telling about teacher and principal, in everywhere those people they will be changing, they will be shifting. So they are not a real boss. Our real boss अपने यजमान है भगवान, भगवान ही अपना यजमान है. भगवान ने भगवत गीता 5वां अध्याय 29वां श्लोक में बताए, भोक्ता बताए कि मैं ये सर्व ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं यजमान हूँ. मुझे आप सभी लोग विश्वास करके आप शरणागति करने से आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं रक्षा. इस तरह एक जगह नहीं, भगवत गीता में 700 श्लोक है. भगवान का ही अर्जुन भी कई श्लोक बताए, धृतराष्ट्र का 1 श्लोक है, संजय का कुछ 40 श्लोक है, लेकिन भगवान का भी 580 श्लोक कुछ है. उसमें 40 जगह 40-50 जगह भगवान ने बताए आप लोग मानव लोग, क्योंकि पशु पक्षी तो शरणागति नहीं कर सकते, वो ज्ञान नहीं है. मानव लोग जो बुद्धि है, सत्गुण को अनुसरण करते हुए, धर्म का अनुसरण करते हुए मुझे शरणागति करने से मैं आपका जो भी पाप पूर्व में किए हैं सभी को नाश कर दूंगा, निकाल दूंगा, निकाल कर मैं आपका रक्षा करूंगा और आपको मोक्ष भी उपलब्ध होने के लिए मैं आपको अनुग्रह करूंगा बोल के कहते हैं भगवान ने. दैट इज द रीजन वी नीड टू सरेंडर टू कृष्णा. यू डू ऑल योर एक्टिविटीज. आपका जो भी कर्म है करते समय भगवान बताना कि मैं आपका सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, ये आपके चरणों के पास समर्पण कर रहा हूँ. इट्स ओनली फॉर एट योर लोटस फीट. एंड यू डोंट टेल कृष्णा दैट यू वांट ए वेरी गुड पैलेशियल बिल्डिंग, अच्छा भवन चाहिए, नहीं तो अच्छा कॉस्टली 1 करोड़ रुपए का वाहन चाहिए, ये सब कुछ प्रकट करने का आवश्यकता नहीं. भगवान जानते लाइक वी एल्डर्स अपने संतान को क्या चाहिए, वी नो दैट वन. लैंड हम उनको जिस समय में वो जरूर आवश्यकता रहेंगे उस समय में हम उसका बंदोबस्त करेंगे, आयोजन करेंगे. उसी तरह भगवान को हम पूरे उनके संतान हैं. ही नोज ही विल गिव अस एट अप्रोप्रिएट टाइम. जिस समय में अपने चाहिए उस समय में अनुग्रह करते हैं. ही इज ऑल्सो तेलुगु पदम कादु, भर्ता भार्य अने तेलुगु पदम कादु, वो संस्कृत का पद है. भर्ता मीन्स ए प्रोटेक्टर. वी आर ऑल, हम लोग पुरुष है, आप लोग सभी स्त्री है, बट बिफोर गॉड वी आर ऑल स्त्री, वी आर ऑल विमेन. ही विल टेक केयर ऑफ अस. ही इज अवर भर्ता, वी आर ऑल हिज भार्यास, वी आर ऑल हिज वाइफ्स, लाइक दैट. एंड ही वुड टेक केयर ऑफ अस. भर्ता मीन्स ए प्रोटेक्टर. इट्स द मीनिंग ऑफ द भर्ता इज प्रोटेक्टर. अगेन भार्या मीन्स ए पर्सन हु सीक्स प्रोटेक्शन. A person who seeks protection. All women, they seek protection from their husbands. But nowadays there is Kali Yuga, that is different. She is also independent because they are all working. They are all working. So they like that they are independent. But that is wrong. In purely earlier before Kali Yuga, that is about 5,300 years ago, no women used to work. They were all protected by fathers till the age of their marriage. From the time of marriage till the time husband is alive, husband will take care of. For any reason, wife dies, wife lives and husband dies before, her son will take care of. For that reason only, every family wants a son. Everyone wants one son. But present again against one and the same. Because daughters also get married and go to in-laws place. And sons, what they do? They also get married and wife will take away. Wife will not allow him to stay there. Or in this
by way of going abroad will earn more money, more prospect. They will go away to America or London or somewhere. So let them take them away. Today there is no question of son or the old age homes are there. They will take care of. No, it's correct. It's correct. Eh? No, that is wrong. That is wrong. See, it's a life cycle. Today I have become old. I don't say I'm young. I became old. My son and my daughter are taken care of, and their children, that is, they have only daughters. They are seeing what their parents are doing. So tomorrow, again, my son and daughter-in-law, they are going to become old. So because their children have seen, they will take care of. It's a cycle. Suppose if a son is not taking care of their parents, their children also they will say, oh, my son has put them in the old age home, we will also do the same. And when you become old, your children will do the same thing. So that should not happen. That is a wrong thing. They pay some 10 or 15 lakhs or whatever it is there to the orphans, put them there. That is very wrong. It is not correct. Because it's a life cycle. In this life cycle, childhood, youth, old age, disease, death, everything is common. You cannot postpone the death even by a second. Even by a second you can't postpone. So at that last moment of second, if you remember Krishna in any of his form, Rama, Srinivasa, Vara, anything, if you remember him, you will be liberated. Moksha mil jata hai. Moksha అనేది ముక్తి అని లభిస్తుంది. ఒక్క క్షణం కూడా తెలుగు హిందీ తెలుగు ఒక్క క్షణం కూడా దొరకదు మాకు. అంతిమ సమయంలో ఒక్క క్షణం కూడా సమయం ఉండదు. వెళ్ళిపోవాల్సిందే. యమదూతలు కానీ విష్ణుదూతలు కానీ ఎవరైనా సరే మనం విడిచిపెట్టరు. ఒక్క క్షణం కూడా ఇవ్వరు. మనం తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. సో అందుకనేసి ఆ అంతిమ క్షణంలో భగవంతుని గుర్తించుకోవాలి. భగవంతుని గుర్తిస్తే మనకు మోక్షం వస్తుంది. వి విల్ నాట్ బి రిపీటెడ్ లైక్ జనవరి టు డిసెంబర్ అగైన్ జనవరి, సండే టు సాటర్డే అగైన్ సండే. అవర్ లైఫ్ విల్ నాట్ రిపీట్ లైక్ దట్. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే విల్ గెట్ అనదర్ లైఫ్, బట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్యారంటీ వెదర్ విల్ గెట్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఆర్ యానిమల్ లైఫ్. యూ హ్యావ్ this is not earlier I told, again I am repeating because you have come now, just now, you have had lakhs of lives like birds, animals, insects. Whenever some mosquito comes, what do? You clap and kill it. But you take 10 times with mosquito life. Next life will be mosquito life 10 times. If you kill some cockroach or lizard or this one, you are going to 10 times of that this thing. Like that it happens. Like that we have taken lakhs and lakhs of lives. God అవుట్ ఆఫ్ కైండ్నెస్, అవుట్ ఆఫ్ సింపతి, భగవంతుడు దయతోని మనకి ఈసారి మానవ జన్మ ఇచ్చాడు. అది కూడా బుద్ధితో పాటు. కానీ మన ఆ బుద్ధిని ఏం చేస్తామంటే వక్ర మార్గంలో, ఇన్ ఏ రాంగ్ వే వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. వీ షుడ్ నాట్ యూ ఫాలో ధర్మ. అగైన్ ధర్మ అనేది నేను విస్తారంగా 2 నెలలు మహాభారతంలో చెప్పాను. ఈరోజు రామాయణ సాయంత్రం, లేకపోతే మంగళవారం బుధవారం మహాభారతం ఉంటుంది సాయంకాలం పూట. ఈరోజు రామాయణం ఉంది. ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ధర్మ విస్తారంగా 500 శ్లోకాల్లో చెప్పాను. అది చాలా అంత విస్తారంగా చెప్పాలంటే కాదు, బట్ ఇన్ షార్ట్ ఫామ్, ఇన్ షార్ట్ వే. ధర్మం అంటే ఏమి? నిజాయితీగా ఉండాలి, సత్యమే పలకాలి. యూ హ్యావ్ టు బీ హానెస్ట్, యూ షుడ్ స్పీక్ ఓన్లీ ట్రూత్, అండ్ యూ షుడ్ బీ helpful to everyone, not just human beings, every living being you should be, and you should be kind-hearted, you take care of, have sympathy. Even all the good qualities is dharma. Again, truthful means there also under certain situation you need to tell lie. You need to tell a lie. When means apad dharma time, when some innocent person is being punished either by the police or in the court. At that time you have to tell some witness, that too he is going to be hanged for the life or something, life sentence, and he is innocent, he is not a criminal. To save him from that crime, you can tell a lie. That is correct. But if you say truth, he will be punished. Something else he will be punished. For that one I will tell you one example. One sage, he will be meditating, tapassu చేసుకుంటుంటాడు, వనంలో తపస్సు చేసుకుంటుంటాడు. సమయమే कोई चोर राज के अंतरपुर से उनके आभरण मुकुट सब चोरी करके आके वहाँ उनके पीछे उनका सैन्य पूरा पीछे आते रहे थे पकड़ने के लिए.
तो ये लोग देखते कि वो ऋषि का आश्रम है, ఆశ్రమం ఉంది, ఆశ్రమంలోకి వెళ్తారు. వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ మూట పడేస్తారు, పడేసి వెనకాల నుంచి వెళ్ళిపోతారు. पीछे से निकल जाते और ये वो जो भी साइन उनके पीछे आ रहा था वो देख लेके वहाँ उस पर घुस जाते. उसके देख कोई नहीं, एक मुनि ने बैठे हुए, उन्होंने तप कर ले और ये लोग पीछे छिपे सो है, क्योंकि फिर वो उठा के लेके आना ना, तो ऋषि को ये कहते कहाँ है तुम्हारे यहाँ कोई रोग है ना, तो बोलते वहाँ गए बोल के he will tell the सत्यम చెప్పేస్తాడు. सत्यम बोलते जाते, जाके उसको पकड़ लेके और इनको भी और एक ये है कि वो लोग भाग के चले आते, ऋषि को पकड़ के आते, तुम्ही का चोर है, तुम्ही करे बोलते ले ऋषि को लेकर गए तो ऋषि को दंड देते, क्योंकि और दूसरे कोई चोर नहीं मिला, उस ऋषि को दंड देते. क्या? शूल, spade. It has to be sharp, it will be sharp spade. It should be inserted from the bottom to the head. It should be that is the way of hanging by the given by the punishment given by the king. So what happens, that sage is a very pious sage. He will never die. Even when they put that this spade into his body, he will not die. He will be there for like that one. After some time, he will go to Yamaloka. When Vishuddha comes, he will go to Yamaloka. There he will ask Yama Dharmaraja. Yama is Dharmaraja. He is the protector of Dharma. He will question, Oh Yama Dharmaraja, you are the protector of Dharma. Then what is Dharma? I am all doing, I am a pious person, I am only was meditating. Why did you give me such a punishment? Then Yama Dharmaraja says, no, during your childhood you have made one small sin. For that reason you have to suffer. What is the sin means? Maybe at the age of 5 or 10 years, between 5 and 10 years, a butterfly, it's a larva. He meets that one with a needle or some stem tree, he pokes through the lava. So then he says, oh Dharmaraja, in that age I don't have any intelligence at all. I don't know what is what. I don't know what is papa and what is punya. For such a small sin, why do you give me such a big punishment? So being you are a Dharmaraja, you do not understand. For that reason I am having power. I will punish you. If a Dharmaraja, he punishes him, he curses him. One is that you take one incarnation following only Dharma, but you will be suffering. And you will also take another incarnation where you know all Dharma, but nobody will listen to you. So do you know who are they? During Dwapara Yuga, Dharmaraja, Yudhishthira was one of the Amsha where he followed Dharma, but he suffered. And other Amsha was Vidura, he knows all Dharma, he is propagating it to the Kauravas, but nobody is caring for him. Like that, Yama Dharmaraja had like that. So we should be very careful while telling. We should protecting Dharma. You can tell lie. That is Apada. That is not the Apad Dharma. But protecting a criminal, if you say lie, means it is a sin. Like that we have to do. He cannot understand by the Vedic knowledge. Krishna Paramatma again, Lord's activities, forms and deeds are inconceivable to our limited thinking power. Our brain, though we have so much of intelligence, we cannot understand anything. Even presently, Vedas also, we can't understand a single letter of it. For that reason only we have Mahabharata, Ramayana and Bhagavatam in translation versions for us to understand. And he is very powerful. He is inconceivable, powerful, everything is possible in him. So, we think we can do something, but we can't do it. Whereas for Krishna, he can do anything. Whatever he desires, he can do. He has shown it. As a 7 years old, he lifted a Gordhan Giri on his little finger. Who will live? Nobody. It is not possible for anybody to live. And he has held it for 8 days without water and food. Of course, it does not require any food, water. Therefore, no one can calculate him exactly. We can't, because for him there is no beginning or there is no end. There is no beginning, there is no end.
In Dwapar Yuga, Krishna, he was on the earth for 125 years. You say that is we are counting. That is not the original Krishna. Original Krishna is the Goloka Vrindavana. He has no beginning, he has no end. It's only an avatara for punishing the bad people and protecting the good people. His first intention is to protect the good people. During Ramayana period also, he has forgiven, he wanted to forgive if Ravana comes and surrenders before him. He sent a message through Angada, through Sugriva, through Hanuman. You come and surrender to me, you return Sita Mata, I will forgive you. But he did not accept because his thinking was less. Whereas Vibhishana, his brother, he is also a Rakshasa only, but he is a good Rakshasa. He was saved by Rama. Prahlada, he is a son of Hiranyakashipu, a demon, but he is a devotee. We worship him here. And similarly, and his son Virochana was a devotee. His son Bali Chakravarti was a devotee. Bali Chakravarti took away all the 3 worlds from Indra. But Krishna said, I can't kill Bali Chakravarti, he is my devotee. That he did not kill Bali Chakravarti, he only sent him into Patala Loka and he made the emperor of that Patala Loka. But he never killed him. So God protects all his devotees. And again, he is not Pakshapata, no discrimination or indiscrimination, nothing is there. He will not do different. Pakshapata అనేది లేదు. అది అందరినీ కూడా సమానంగా చూస్తాడు. అందరికీ కూడా ఆహారం ఇస్తున్నాడు. అందరికీ ఏ ఆహారం కావాలో అంత ఆహారం ఇస్తున్నాడు, వస్త్రాలు ఇస్తున్నాడు, ఉండటానికి జగ ఇస్తున్నాడు. It's all how much we qualify. If you are having lot of devotion to him, he will have a lot of affection. If you are like Duryodhana వాళ్ళందరూ కూడా, because they were enemy to Pandavas who are devotees. And Krishna నిన్న మహాభారతం చెప్పాను నేను. Because you are enemy to the Pandavas, so you are also my enemy. If you are a friend to them, you are my friend. Like that. So it is that we are making all this, in this nature, we are acquiring all those materialistic qualities and we are forgetting God, thereby we are getting punished. It is not that God is discriminating between me and you or somebody like that. Nothing he is doing. He is treating everybody equally. Not only we, all living beings. See, we at least human beings having intelligence, మనం అక్కడ వంటింట్లోకి వెళ్ళేసి వంటింట్లో మనం వండుకుంటాం, మనకి ఏమేమి కావాలో అన్నీ వండుకుంటాం. These living being, other living like ants, other animals, insects, they don't have any knowledge to cook their food. But he is providing. And he is also providing water, Athni, air, everything to all, every being, not only to us, he is providing to everybody. So we should understand that. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but he can easily be understood by the pure devotees, just because they are intimately related with him. ఏదో వేద జ్ఞానం ఉందనేసి మనకు ఆయన గుర్తిస్తామని కాదు, వేద జ్ఞానం అక్కర్లేదు, అతన్ని ప్రేమతోని ఆరాధించడమే కావాలి. వాట్ ఈజ్ భక్తి? భక్తి ఈజ్ ఓన్లీ అనదర్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రేమ. పుత్ర ప్రేమ, పుత్రికా ప్రేమ, పుత్రవాత్సల్యము, మాతృవాత్సల్యం, పితృవాత్సల్యం ఎలా అంటామో, between wife and husband is known as kama, whereas the same love and affection to God is known as bhakti. Bhakti is nothing special, this thing. It's a word given to the devotion of God. But he can be really understood by the pure devotees because they are intimately related to him. The devotees therefore know that although he appears amongst the animals, he is not an animal. उन्होंने पशु पक्षियों के योनि में भी जन्म लिए, as a fish, मत्स्य अवतारा, कूर्मा अवतारा, वरा अवतारा, all the animals, but still he is worshipped. In Tirupati, when you go to Tirupati Balaji, first you go to Varaswami. After having the Varaswami darshan only you go to Balaji. You cannot go here directly. Again, there also many people, they go to Padmavati first. And then, they go to Srinivasa, later they visit Padmavati. That is wrong. First you need to have the darshan of Varaha, Srinivasa, then come to Padmavati. Sorry, I told you the wrong way. You need to go to Padmavati first. There you take darshan, then go to Varaha and Srinivasa. Why means Padmavati is there in the heart of the Srinivasa. When by the time you go there, what happens? There they don't allow you to stay for even a few seconds. What the mantra will be hearing over there? You will be hearing only one mantra nowadays. Pundi, Pundi, Pundi.
That is the only mantra you listen. They don't allow you to think of God. So whatever time you get, you pray before Padmavati in the Alvel Mangapura. There, after that, when you go to Varaswamy and Srinivasa, you can see her in this thing. Before we go there, she is the Purusha. They say her as Purushakara. Purusha means recommendations. Today, if you want to go to some minister or IFS, the lower officers, you meet them first. Before you go there, because you bribe the officers. When you bribe them, those people, they go and tell in your favor to the higher officers or minister. But here you need not bribe Mataji. Just pay to her and go there. By the time you go there, she is already there with Srinivasa. She will tell, Vidanta Manasantaname Swami, Vilan Rakshinchali, Vilan Kavali, Vilan Anugrahinchali Manamu. And she will only tell. You need not tell. But many people, what they do, they go there, then come to here. Instead of that, you go to Padmavati, then go to Srinivasa. That is the right thing. So we can understand the devotees well. Because again, Alvelamanga is also one of the devotees, because she is the Radhani's incarnation, Bhudevi incarnation. All these incarnations coming from Radharani only. So like that. So he is also not an animal or a man, nor a rishi or a fish. As a rishi is Vyasadeva, Narada Maharshi also. We are ending in another 5 minutes. So with this verse, we are completing Bhagavath sloka for today. But for now, we shall chant Hare Krishna mantra 5 times and disperse for now. In the evening, we have Ramayana today. It will be 4th day ending and 5th day battle between Rama and demons. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. 5 times Hare Krishna mantra loudly, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, this Mahamantra, because we all have less time, we are chanting only 5 or 10 times, but otherwise Chaitanya Mahaprabhu, he has also, you can see Chaitanya Mahaprabhu has lifted his hands and he is standing. Again, he is also a devotee incarnation of Krishna only. He has given his Mahamantra about 700 years ago with instruction to chant 64 rounds on Japamala. If somebody is there, you can see our Japamala, they contain 108 beats. Counting 108 beats, Hare Krishna mantra into 64 rounds, but we don't have that much time. But as much as possible, you chant Hare Krishna mantra so that all your mind will be peaceful. All your activities, whether it is studies or you become a professional and work somewhere, it will be successful. And you will be remembering God at the end of your life. Like that it happens. For that reason, it has no regulation. That नियमाल एवी लेव नियम कोई कुछ नियम नहीं है. आप 24 घंटे जीवन काल జీవితం అంతా కూడా ఇది స్మరించాల్సిన మహామంత్రము ని స్మరించాలి. అందుకనే భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు. ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్. కొన్నాళ్ళు మీరు అభ్యసించి యు సీ యు విల్ ఫైండ్ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. యు విల్ హ్యావ్ అచీవ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ యువర్ యాక్టివిటీస్ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ యు విల్ కంటిన్యూ ఆ విధంగా. అండ్ యు గ్రోత్ whoever is having can continue for 5 minutes, otherwise you can proceed for your this thing if your class time is over. Because ఎందుకంటే మనము కృష్ణుడిని గుర్తించుకోవాలి. దానికి అభ్యసించడానికి ఇది ఒకటే రకంగా వీ హ్యావ్ 4 types ఆఫ్ గ్లోరిఫికేషన్. ఒకటి ఈ సత్సంగంలో మనం ఏదైతే విన్నామో మన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మన వృద్ధులైన మన తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. నానా दादी सभी रहती. वो सभी लोग जो भी हंसे हैं उनको बोलने का एक तरह का प्रीचिंग. इट्स नॉट दैट आप व्यास के आसन के ऊपर बैठी प्रवचन करना है. आप अपने घर में निवास में जो भी कुटुंब सभ्युలు थे सबको వాళ్ళందరికీ కూడా వినిపించాలి. ఎందుకంటే వాడు కూడా మంచి కావాలి. మరి నేను ముందే చెప్పాను, అందరి మంచి కోరాలి. నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్స్. సో వీళ్ళు ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ప్రచారం కూడా చేయాలి.
స్నేహితుల్ని మిత్రుల్ని కలిసినప్పుడు మిత్రులు కలిసినప్పుడు వాళ్ళతోని ఏ సినిమా కోసమో మూవీ కోసం వీ షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. అదర్వైజ్ వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ యూ హర్డ్ ఇన్ దిస్ సత్సంగ్, Mahabharata, Ramayana, all those things. Not only here, wherever you participate, those things you speak like that. And ఎవరైనా వస్తే అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి. యూ నీడ్ టు ట్రీట్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. అండ్ బిఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ డే వాట్ ఎవర్ వంట గదిలో ఏదైతే తయారవుతుందో దాన్ని భగవంతుడు अर्పించాలి. ऑफर इट टू गॉड. भोग करके उसके बाद में प्रसाद के रूप में खाना. इस तरह करने से विल बी रिमेंबरिंग गॉड मेनी टाइम्स. మళ్ళీ మనం నమస్కారం అనేది ఎవరికి చేయకూడదు. నమస్కారం అంటే ఇట్స్ ఏ మీనింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ సర్వెంట్ టు యూ. యు ఆర్ నాట్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ వన్. యు ఆర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ గాడ్. యు ఆర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ గాడ్. యు ఆర్ నాట్ సర్వెంట్స్ ఎనీబడి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు విష్ దెమ్, హరే కృష్ణ ప్లీజ్ బయట చేయి. బికాజ్ వెన్ వీ సే డూ నమస్కార, ఇట్స్ మీనింగ్ దట్ I am your servant. You are not anybody's servant. Of course, if you can see the Antaratma, Antaryami is there, Paramatma is there in everybody, but you won't see. If you know my name, you will be recognizing me with my name. If I know your name, I will be knowing your name. నీ పేరుతోనే గుర్తుపడతాను కానీ నీలో ఉన్న పరమాత్మని నేను చూడలేను. సో అందుకనేసి మనం వాళ్ళకి ఏదైనా when we want to wish him, instead of saying good morning means only 2-3 hours. It's only 2-3 hours like that. Become only partial time. You say, practice saying Hare Krishna, Jai Sri Krishna, Jai Sri Mannarayan, Jai Sri Ram, all those. When you say this one, you'll be remembering. That is a type of remembering. And when you tell, even others will also learn about it. This good morning, good afternoon, all these things are only English people. They made us to practice like that one. They wanted to change our lifestyle. They want to change our lifestyle. ఆ విధంగా మనం మార్చేశారు. దాన్ని మళ్ళీ మన కల్చర్, మన ట్రెడిషన్, మన సంస్కారం ఏముందో ఆ విధంగా ఉండాలి. భగవంతుని చింతన చేసి ఉండాలి. సో వి షల్ జస్ట్ కన్క్లూడ్ ది ప్రేయర్స్ అండ్ స్టాప్. స్వస్తి ప్రాప్య ప్రయంత్యాం న్యాయేన మార్గేణ మహి మహిషాః గో బ్రహ్మవస్తు నిత్యం సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. కాయేన వాచా మనసేంద్రియా బుద్ధ్యాత్మతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ పరస్మై నారాయణాతి సమర్పయామి. श्रीमन सर्वमी सर्वम श्री कृष्णार्थ मंगलम 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 नित्य मंगलम. जय श्री राधा गोपनाथ की, जय श्री जगन्नाथ सुरमाय की, जय श्री नरसिंह भगवान की, जय श्री महाराज की, जय श्री महाप्रभु की, जय श्री पंचतत्व की, जय श्री मध्वाचार्य ग्रंथ की, जय श्री हरे कृष्ण महामंत्र की, जय श्री प्रभुपाद की. हरे कृष्ण. हमें शाम को रामायण हिंदी में प्रसंग रही थी, ऐसे ही तेलुगु में भी अनुवाद करूंगा. आप सभी उसमें भाग लेने के लिए प्रार्थना है. हरे कृष्णा. All my lectures